welcome to the Karshan FS show. This is season 3, episode 5. We were at Swifties. By the way, I did not pick up, like, I did notice this when you talked about it, but वैसे मैं भी एक ज़माने में केटी पेरी की काफ़ी बड़ा fan था. And she had this one song, which is the one that got away, right? Which is something I am like, my core memory is of this playing in the gym in 2012, right? कि हमेशा होता था कि केटी पेरी की यार माहौल था हमेशा वहाँ. मुझे पता नहीं मैं कौन सी नलायक जिम की हिस्सा था कि जस्टिन बीबर, केटी पेरी ये सब चलता था. मगर क्या करे भाई कि अगर आप चाहते तो ख़ुद की हेडफोन्स भी लेकर आ सकते थे. मगर the one that got away has a special place to me because it's something that's always haunted me, right? So in my life, I think the good decisions I've made don't really turn up in my memory, but the wrong decisions I've made have constantly haunted me, right? And this is in terms of everything else. But the one decision that I didn't want to get wrong in all my life is to have the right person and to lose them. This is something that keeps me up at night, and it's because of the person I am. कि एक ज़माना था और काफ़ी उतने भी साल पुराने नहीं कि when I was an impulsive person who took decisions based on what they're feeling, and that is not a very good thing to do. I will say that in hindsight, it is very helpful in terms of rising to authority, like, being somebody. Like, I don't make stupid impulsive decisions, but I also do not fear taking decision. I'm always down to make like the hard call when the time comes. But in terms of relations, I've learned this quite recently. You have to learn to forgive, you have to learn to let go of things. And I was thinking of like an example I think we can think of is probably our friendship, where over like 23 odd years, there's been times when we've both come up short, when one of us would have been disappointed with the other, but we've not like held on to that. I'm not sure I can't really think of specific examples, but even if there was something, which it's bound to be, it's too long a time to, have everything go perfectly. But I think what we've learned is just to let that go, because in the long run, it doesn't matter, right? And I've been trying to make that change in terms of how I make decisions and how I have high standards and how I want everything to go my way. कि मैं अभी भी रखता हूँ वो यकीनात, मगर ताल्लुकात की हिसाब से नहीं रखता हूँ. But it's just what I was thinking. Yeah. Maybe be same scene there. I mean, I've definitely changed a lot in that way, and like, especially in my personal life, I'm just, don't really hold on to things anymore at all, like, in fact, I like, it's surprising how fast I move past things, even things that might seem serious to most people. Yeah. Up to yaar bas, it's like, I know it's not like, not something worth losing sleep over, Yeah, same यार. कि मुझे भी काफ़ी आसान लगता है कि भूल जाना most things कि कोई असर नहीं पड़ता यार. It's like I'm kind of desensitized, detached from my own life. कि जो भी आखिर हार गए या जीत गए कोई फ़र्क नहीं पड़ता. Like, it's a normal day, कल भी कुछ और होंगे. I'm just focused on the process. But सिर्फ एक दो बातों की अलावा कि मोहब्बत में ये काम नहीं करते कि काफ़ी एहसास involved होता है, and you kind of feel the small wins and the losses as well. उसके अलावा यार काफ़ी आसान है ज़िंदगी. If you ask me, और यार ये मैं तो काफ़ी बात करना चाहता हूँ इस बारे में कि ज़िंदगी की मकसद क्या है. कि कल मैं पढ़ रहा था रेडिट पर कि there was a question in r/depression. And by the way, I kind of grazed over the fact that you're now a lurker.
कि आज मैंने शेरा की बेइज्जती की कि उसकी शोहर एक लड़कर है. I told her, just tell him to make an account. But it's so अजीब man कि Reddit की बात अब भी चल रहा है. But मुझे पता नहीं. और वैसे भी उस ज़माने में Reddit को ईमेल नहीं चाहिए था. You could just make a username and a password. So if you actually lost your username, you actually lost, your Reddit account. Like there's no recovery email back then. तो और मेरे यार Reddit की यूज़र मेरे बाकी सब की यूज़र से काफ़ी मतलब फ़र्क है. तो मुझे याद नहीं आते कभी कभी कि पासवर्ड मुझे पता है मगर यूज़र नेम मैं भूल जाता है. तो आई जनरली डू नॉट लॉग आउट ऑफ Reddit कि मुझे पता है कि इफ़ आई लॉग आउट मुझे शायद लॉग इन नहीं कर सकते दोबारा. मगर so on r/depression, I was reading. It's a horrible subreddit, by the way. It's exactly how you think it is. Every second post is about somebody wanting to kill themselves, and mental health issues are serious. Suicide is serious. If you do need help, reach out. I'm sure there's suicide hotlines and there's mental health professionals you can talk to. And it's not a joke. I'm just saying, ऐसी माहौल है. But there was a post that was talking about, which is like the post that I kind of like that I'm subscribed for, which is like a deep discussion. And this person asks, what is the meaning of life, right? Like if you have somebody who's gone through depression, or if you have somebody who's not been depressed at all, what is the meaning of life that you kind of figure out later on? And the top comment was, there is no meaning, it's all pointless. It's just the journey. You can, in the end, none of it makes sense, but it's all about what you kind of do along the way, right? And what that means to you. So, मैं यार ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ये 30 साल में क्या मतलब we know our journey till now. Like forget the fact that we're trying to look at the meaning of life from the end of our life. वो यार हम शायद अब बता नहीं सकते कि हमें भी पता नहीं. मगर in the 30 years we've been alive, हमने क्या उखाड़ ली कि what holds meaning in our life and what's important to us. And if you look at that and if you extend it to the end of our lives, I don't think it'd be too different. I think you still find value in the same things. बट अक्सर इंसान काफ़ी बेवकूफ़ है, ये समझता नहीं. मगर मैं जैसे बताया कि काफ़ी नाराज़ हूँ ज़िंदगी से, खुदा से, सबसे. तो मैं इन सब सोचों में पड़ा था और मुझे ये समझ आया कि there's along the 30 years that I've been alive, there's not been so many things that I've done that there have been a lot of things that I've done that I've wanted to do. मगर वो एक छोटे वक्त के लिए मुझे खुशियाँ दिलवाए थे. उसके अलावा if I look at life in the long term, the only thing I've done really that makes me happy is a few key moments where I've been there for somebody, or there's been somebody in my life that means something to me that nobody can take away. उसके अलावा मुझे पता ही नहीं, कोई मकसद ही नहीं लगता. मगर आपको क्या लगता है जी? मैंने आपने शायद बहुत खूबसूरत बात की है कि I think the most memorable moments in our lives are always one where we've been there for someone, or we've been there, we've managed to make a difference, a positive impact on someone else, someone we care for. Because you think, man, that real fulfillment, it comes from giving, not from getting, like if you have like accomplishments, like times where you've gotten something, like made a lot of money, or had a really successful year, or like won an award of some sort, or just achieved something that year. It's something you've achieved, you've received it, but then I think the pleasure from that, or the fulfillment from that, like fades away, like soon after, like a few days, few weeks after it's gone, like that sense. But like when you're there for another person, where you're the one who's like, the one who's
like supporting them in some way, or like there for them in terms of emotional support, then I think it's much more impactful. You know, it's something you're likely to remember for many years. If I think it's easier to rule out कि ज़िंदगी की मकसद क्या नहीं है, तो I think I'd like to start there कि यार just for example एक ज़माने में क्रिकेट हमारे लिए हमारी ज़िंदगी था, सही? It was the most meaningful things in our life, and it's the only thing that we talked about. हम मारे थे, अगर 5 मिनट मिलते तो हम क्रिकेट खेलने जाते हैं. और मेरे जो इतने नॉक्स थे, मुझे एक भी याद नहीं. मुझे याद नहीं कि मेरे हाई स्कोर क्या थे, मैं किस दिन पर अच्छे बैट की थी, किस दिन पर बुरे थे, नहीं याद है. उसके अलावा फुटबॉल भी यही कहानी है. मुझे नहीं लगता ये सब मकसद. जैसे अब आपने कहा कि एक हफ्ते शायद रहते वो, और उसके बाद याद ही नहीं आता है. और जो स्टडीज़ के बारे में या हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में मेरे अच्छे नंबर आए थे, बुरे आए थे, मुझे कुछ याद नहीं. एक भी लम्हा मुझे वो खुशियाँ नहीं दिलवा दी जो साल बाद रहे मेरे साथ. और प्रोफेशनल बात की तो मेरी काफ़ी प्रमोशंस हुए, काफ़ी तरक्की हुए, कुछ नहीं, कुछ याद नहीं, कुछ मैं मानता भी नहीं. और क्या हुआ है भाई कि काफ़ी सर्टिफिकेशंस हुए, काफ़ी लोगों से मिले यार. कुछ भी नहीं कि मैं जब भी स्टेज पर था वो लम्हे भी मुझे याद नहीं कि अहम होने के बाद आप भूलो, मुझे याद भी नहीं होते. तो पता नहीं यार कि मुझे दो चीज़ें लगता है कि मुझे ये ज़रूर चाहिए कि, और चाहिए नहीं, मैं थोड़ी खुदा हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं छोड़ जाऊँ कि मेरे कुछ रहे यहाँ इस दुनिया में. और पता नहीं कि हमारे मतलब वाले होंगे, ऐसे कुछ होंगे, मगर उसके अलावा कि अगर मेरी शायरी या जो मेरी जैसे ये पॉडकास्ट ऐसे कुछ रहे, तो ये मुझे लाजिम लगता है कि यू नीड टू लीव सम सॉर्ट ऑफ मार्क ऑन द वर्ल्ड, कि सिर्फ आपकी हरकतों से नहीं, अच्छे हरकतों से नहीं, वरना ये इससे भी कि जो आपने क्या प्रोड्यूस की या क्या बनाई आपकी हाथों से या आपकी अल्फाजों से क्या बनाई, तो ये मुझे लाजिम है. एंड आई डोंट रियली थिंक दैट ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव डन आर मेमोरेबल, मगर एक छोटी सी मार्क फिर भी ठीक है. उसके अलावा यार ज़िंदगी की मकसद क्या है, मेरी जो भी गहरी ताल्लुकात है उससे काफ़ी होता है कि जैसे मैंने कहा 7 लोग हैं मेरी ज़िंदगी में, तो उसकी मुझे यादें तो रहता है कि मुझे एक कहानी पता है, और मुझे कहानी कहने में भी काफ़ी अच्छे लगता है, याद आता है. मगर फिर भी ये सवाल की जवाब नहीं कि ज़िंदगी की मकसद क्या है, मुझे लगता है कि पॉइंटलेस ही है. ये सिर्फ अहम बात है, मगर फिर भी पॉइंटलेस है. जी यार, ऐसे बात सही है यार आपकी कि कोई एक मकसद तो इसमें नहीं है, पर हम इसमें अपने मकासद ढूंढ सकते हैं, चाहे अगर एक कोई मकसद. तो हाँ ब्रो, मैं भी ये इसमें अकीदा रखता हूँ कि शायद एक कोई मकसद ना हो, पर इंसान अपने अपने मकासद ढूंढ लेता है कि सबका कोई अपना एक नजरिया होता है कि मुझे अपनी जिंदगी में ये हासिल करना है, या ये चीज इस तरह की एक चीजें मुझे हासिल करनी है. It's not necessarily like you know, a financial goal, although that might be the case for some people. But लोगों का एक रहता है कि bro, जब मैं 80-90 साल का हो जाऊंगा and I look back at the life that I lived, I wanna feel a sense of fulfillment and not a sense of regret, you know. और मेरा ख्याल है कि अगर आप उस उम्र में अपनी जिंदगी पे यार सोचते हो कि मेरी यार 90 साल की हयात मुबारका में मैंने क्या क्या किया था, वो तमाम चीजें जो मैं करना चाहता था क्या मैं कर पाया, और you know, कोई क्या ऐसी चीजें थी जो अधूरी रह गई, और you know, if you have more moments that you cherish than regrets,
then I think you've accomplished your life's maqsad. नाइस couple of things I want to say कि एक तो बात ये मैं अभी कह रहा हूँ कि मेरे पसंदीदा शख्स से शादी करना मेरी ज़िंदगी की मकसद लगता है, मगर ये भी हकीकत है कि जिस दिन खुदा करे वो शादी हुए या निकाह हुए, उसकी बाद मुझे यही लगेंगे कि मैं फिर ये सोच में पड़ेंगे कि मेरी ज़िंदगी की मकसद क्या है। सही, तो ये सिर्फ आजकल की मसला है, ये कल कुछ और होंगे। मगर ये भी बात आपने एक और बात कहा था कि यार जो वैसे मुझे सही है कि हम अपने आप की मकसद ढूंढ लेते हैं, और बात यह है कि अगर आपको वो हासिल हो गया है ना, तो दोबारा मकसद ढूंढने पड़ता है कि ज़िंदा रहने की क्या मकसद है फिर। सही, और जिसमें हम हारा, सही, वो हार हम मकसद मानते हैं भाई, कि हमें लगता है ये अधूरी रह गई, ये अगर मिलते तो मुझे ज़िंदगी की मकसद भी मिलते। ये भी गलत सोच है कि अगर वो भी हम पार की तो फिर भी ये एहसास आता है कि दूसरा तो मकसद ढूंढने पड़ते हैं। तो शायद ये मुसलसल रहना ही ज़िंदगी है यार। और एक और बात है कि मुझे ना इस सवाल की जवाब पता है कि इससे पहले जब मैंने ये पूछा, मैं शिकावतें कर रहा था आपके भाभी को, और आपको पता भी है मेरी शायरी में सबसे फेवरेट लाइन भी ये है, मैं काफ़ी कहता हूँ, मेरे जो पेज है उसमें सिर्फ एक 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 नज़म है जो पिंड है, और ये वो है कि मैं हमेशा कहता हूँ आपकी भाभी मेरी पसंदीदा शख्स के अलावा, ज़िंदगी की मकसद के अलावा, मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत शख्स के अलावा मेरे लिए मेरे ईमान भी है। और उसने ये मुझसे कहा था कि ये ज़िंदगी सिर्फ इम्तहान है, और ये वाकई सच है कि इसके अलावा कोई मकसद ही नहीं। कि हर दिन आपको ये पैटर्न तो समझ आएंगे कि आपको आपकी ज़िंदगी में आपको जो भी ख्वाहिशात है, छोटे हैं या बड़े हैं, इम्तहान आते जाते हैं यार। कि वो किसी की भी ज़िंदगी आसान नहीं होते, छोटे छोटे मसले होते हैं वरना बड़े बड़े होते हैं, आपकी ख्वाहिशात के हिसाब से होते हैं, मगर फिर भी होता है। और मुझे यही लगता है कि इम्तहान है, और अगर आप अपने ईमान तो रख सकते हैं तो आपने जीत ली। और पता नहीं कि मैं वैसे मैंने कहा कि मैं खुदा नहीं हूँ, मगर अगर इसकी बाद एक एक जन्ना है, एक जहन्नम है, तो ये शायद हमें मकसद वहाँ मिलेंगे। इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में शायद ये बेमकसद इसलिए लगता है कि है बेमकसद, कि सिर्फ इम्तहान है, सिर्फ यहाँ ईमान दिखाना है। ये बात तो हो सकती है यार, ये मतलब क्योंकि इसके अलावा और कोई मकसद, यूनिवर्सल मकसद तो ऐसा नजर आता नहीं है। पर हाँ, साथ ही साथ यार मेरा ख्याल है इस पे ये भी सोचना पड़ता है कि आपने अगर दुनिया में आपने रहना है तो 80-90 साल आप सिर्फ आखिरत का इंतजार भी नहीं कर सकते। you have to find fulfillment in दुनिया as well. वरना यार आप अगर बैठे रह जाओगे तो it's like it would be a real miserable existence. सही, I agree with you कि जो लोग उस तरह की ज़िंदगी जीते हैं कि इस दुनिया को मानता ही नहीं। और हमें तो पता है कि जो आपकी स्कूल के बंदे थे ऐसे, वी डिडंट रियली लाइक दोस गाइस एज वेल, कि हम तो दुनियादारी नहीं, मगर वैसे तो यहाँ है तो कुछ ना कुछ करते हैं, ऐसे माइंडसेट है। मगर यार मुझे एक ज़माने याद है कि जो हम 2011 उस वक्त में हमारे एक इंग्लिश टीचर होता था, तो बंदी काफ़ी नालायक थे, मगर उसने एक दिन सवाल पूछे कि through the entire class, and we had to get up one by one and state what we thought. And she asked, what would you like to be on your deathbed, right? Or what would you like to have achieved at the end of your life? और
काफ़ी लोग खड़े हो गए और बताए कि उस ज़माने में ये सोच था कि I want to have graduated from one of the top universities, or I want to have made money, I want to have been professional or successful professionally, ये सब. और जब मेरे मौके आ गए ना, मैं तो आपको बताया हमें कि हम विंग करते हैं. अगर 12 मिनट वहाँ बैठकर सोचने के वक्त मिला था, हम सोचेंगे नहीं भाई. We go with instinct. इतने नालायक है. But I stood up and I still didn't know the answer, and I thought, and I said the first thing that came to mind. I said, at the end of my life, I don't want to have any regrets. सही. Now, इस बंदे को बात तो मैं मानता हूँ कि काफ़ी अच्छे नेक ख्वाहिशात हैं उनके, मगर यार उस ज़माने में और आज भी मेरे काफ़ी रिग्रेट्स है. सही, ये तो बात सही है. But पता नहीं कि I still don't think that I've missed out on something. शायद मैंने कुछ की है और वो करने से मैं ये रिग्रेट करता हूँ कि मैंने ये की, मगर I've never had the regret of missing out. Do you know what I mean? There's never been a girl that I liked that I didn't ask out because I was too shy. शायद उसको पूछने से मेरी बेइज्जती हो गई या वो बेवफा निकली. ये सब रिग्रेट तो मेरे है. सही, मगर आज तक ये नहीं हुआ कि अब मिस्ड आउट ऑन समथिंग. पता नहीं, मुझे भी पता नहीं. वो बंदे शायद मुझसे ज़्यादा बताया था उन्हें. सही नहीं, ये तो मैं समझ सकता हूँ पर हाँ ब्रो, मेरा भी ऐसे कोई खास इस वक्त रिग्रेट्स है नहीं. I know कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है जो मैं करना चाहता हूँ. But I know कि वो तमाम चीजें they're achievable. They are something that are that can be accomplished. Okay, there is a way to attain those things. So that's definitely something that keeps me going, man. In my everyday is I know कि यार ये चीजें भी बाकी हैं that are on the checklist. That when I get to them, it's going to be something really memorable and an experience that I'm going to remember for a long time. And it's mostly comes down to the people that you meet on those journeys. Yeah. If they're people you really vibe with, people that you really get along with. I remember someone saying once, man, he was like this musician at this place where I was staying. He was playing in live music. He was really fucking good, and he's playing the violin. Right. And I remember him saying, man, that it's the people who make a place. Nice. Oh my God. Yeah. And that's so true, man. Ultimately, that's what it comes down to, when I think of places that I have fond memories in, it's mostly the people that I met on those journeys, and that happened to meet good people on those in those memories, So I think that'll be a big thing, that'll determine how memorable those places turn out to be. Obviously, in our heads, we do tend to, idealize these places as paradise and really heaven on earth. I know it won't be everything we imagine it to be, but a lot of places that I want to go to, I know that. How my experience turns out will depend a lot on the people that I cross paths with. सही यार. और दो बात है कि forgot what the first one was. But I've heard something similar, home is a person. ये मैंने सुना था. और एक बात ये है कि जब मैं छोटा था ना, तो मेरे वालिद साहब मुझे एक बार कहा था कि why you see rich people unhappy is that they don't really have to wait for anything, And the example he gave me is if they like a car, they'll just go and buy it, but it doesn't mean anything to them. Whereas if you take a person who's saved up for it for 5 years and he buys the car, it means a lot to him. And आजकल मुझे लगता है कि ये हकीकत है कि when you talk about something that you're looking forward to, I can see how it's not the same for me,
लाइक मुझे कोई भी चीज़ में आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कि मुझे पता है कि या मैं कर सकता है और आज कर सकता है, या मैं कर ही नहीं सकता है, सही। एंड ऐसे यार कोई भी चीज़ मुझे मुकम्मल नहीं करते, ना मुझे खुश करते, नो डू आई डोंट लुक फॉरवर्ड टू एनीथिंग, राइट। और एक और बात है कि इट्स सिमिलर कि जब मैं जिम जाने शुरू की ना, तो कुछ देर बाद मुझे एक ख्वाहिश हुआ कि आई वांटेड टू हैव अ सिक्स पैक, राइट। And I was 17 at the time, and I set a goal for myself, right? Ki on my 18th birthday, I wanted to have a six pack, and I had about 3 months left at the point, and I was in decent shape, by the way, at that point. So I had 3 months left, and I thought to myself, this is something I want, koi bhi कीमत में, see? So I started working for it. I didn't take a day off. Like आपको पता है कि उस वक्त में काफ़ी कुछ करने होते हैं, कि यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने पड़ते, काफ़ी एग्ज़ाम्स है। फिर भी I didn't take even my Fridays. I was in the gym just working on abs, right? And I got closer and closer and closer. But on my 18th birthday, on the day of my 18th birthday, and I still have this picture of myself on Body Space. नहीं हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ वो ख्वाब, सही। और मुझे ज़्यादा असर भी नहीं पड़ा कि आई फेल्ट कि मैंने काफ़ी मेहनत की, मगर आखिर बड़े ख्वाब देखे और मुकम्मल नहीं हुआ, तो ठीक था। And it took me a long time. It took me probably it was 3 years ago, right? So because after that I went off to uni, it wasn't really possible. I was working out, but it wasn't possible. I came back, and I was kind of busy the first few years, and then I was so pissed off with myself that on New Year's Eve 2020, I thought, this is it. Like, I'm done. I'm so annoyed with going half in with all of this. And at this point, I do have like a 4-pack, right? I've had it for years, but I just wanted a 6-pack, and it was just not happening. And I was so pissed off that I thought to myself, I'll do anything. And on New Year's Eve, I met. It's on New Year's. I met somebody I consider a brother, and the gym was empty, and it was a new gym. I just walked into a new gym because I wanted to change everything, right? I didn't care. I didn't want to go to the same gym. Anything it took, I would do. कोई भी कीमत में मुझे ज़रूर था. That's when I met him. Gym was empty, and he told me, listen, you need to, if you're willing, you can do it, but you need to give up everything that you desire for this one single desire. And I said, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी आप मांगते मैं देंगे, मगर I want the results. And he said, fine, cut sugar, and this is your diet for as long as it takes. And I said, ठीक. And I started working, right? And like I said, I went zero sugar. I changed my diet. I started training harder. I started training with him, and it took me about 6 months, right, from when I started to take my shirt off and see a six-pack in the mirror. Now, the day that happened, it's 2020, so I'm 26 years old, right? 8 years from when I wanted to have that, I finally achieved it. And you know what I felt then? Nothing. Not the slightest bit of happiness. Yeah, I didn't. No, I didn't feel any sense of accomplishment. It was just like, what's next? तो पता नहीं भाई No fucking way, bro. That's man. No, man. You should definitely take a moment. At least, like, I think this is why journaling is something people suggest as well. Yeah. Because in moments like that, you really want to take a second to step back and really reflect on what just happened, and give yourself some time to process what's happened, and also like just be grateful for like how far you've come. And really putting those thoughts on paper really helps like solidify them in your mind that wow, this is something I should really look at and take pride in. No, I agree with you, Mukammal, but you know what I think the problem is? कि I'm too harsh on myself. कि जब भी when this moment of truth finally happened, the thought in my mind is not that I'm proud of myself. The thought in my mind is exactly how I say to this. It took me 8 years, right? So in my mind,
I'm a failure. Do you know what I mean? Ki I'm that harsh on myself. Ki I'm not really giving myself that moment to even enjoy it. Because in my mind, I should have had this moment 8 years ago. And I think I'm making the same mistake with my marriage. I'm making the same mistake with your bhabhi. I'm making the same mistake with my career. And I don't know how to get out of it. 'Cause you know me, yeah. I'm quite harsh on myself. Maybe that's why I don't enjoy my life. Ki जो भी मिलता है, like from the outset it looks like मुझे काफ़ी मिलता है, but ये लोग को नहीं नज़र आता है कि what I'm getting, I'm like 2 years behind, you know. What I want now is something that I'm not going to get for a long time, but I will always remember that I wanted it now and I didn't get it now. और शेरा भी आज मेरे मजाक उड़ा रहे थे कि बंदे ने एक बात सीखा, पूछा खुदा से और नहीं मिला तो वो नाराज़ हो गए. सही है यार कि काफ़ी छोटे छोटे बच्चे की हरकत है, मगर शायद यार आपकी बात ज़रूर सही है कि and I like the fact that you can appreciate these things and take a moment. But मैं कभी नहीं करता भाई. I'm always on to the next one because I feel like I'm behind schedule. और मुझे लगता है कि perhaps it's because we grew up in that kind of mindset where, you know, हमें like we'd always get yelled at for doing the wrong thing but never appreciated for doing the right thing. तो हमें भी पता नहीं यार कि कैसे हमें अपने आप की तारीफ़ करना या मानना जो भी हमने की है. पता नहीं, शायद वो बात है कि you know, if you get 99, the question is not, you know, well done or like how did you get 99. The question is what happened to the one that you got wrong, right? तो बिल्कुल शायद वो mindset नहीं सही बात किया आपने. I mean, that's definitely something that stays with you, you know, if it's been like instilled in you from like a young age, that, you know, to always aim higher and higher and to never be content, because being content means you're complacent. Exactly. You know? But yeah, man, that can definitely leave you feeling like empty as well, you know, like the sense that there's just a hole, like a void that you're always trying to fill with something different. But you never truly fill it with anything, you know, like it never gets filled no matter what you do, what you accomplish, what milestone you clear. Exactly. And yeah, man, I feel like a healthy attitude to have towards that is to, you know, to work hard, definitely, and like, you know, aim high too, like it's important to have goals, you know, and no matter what you do, but to also take a minute to like really celebrate those accomplishments and also like reflect on them, you know. मानता हूँ यार, and like I said, I want to be a little bit easier on myself, but it's very very hard to for me to let go of that mindset, you know, because यार मैं ये भी बात कहूँ कि मुझे ये नज़र आता है जब मैं किसी और में ये नज़र आता है कि sometimes people hold on to their defense mechanisms way way longer after they no longer need to, you know, कि मेरे भी ये defense mechanism है. A lot of people and their trauma responses are something that they make, you know, their हकीकत उसकी it becomes a way of their life, right? तो मैं भी ये करता हूँ, and I'm holding on to something that I no longer need to, but I'm holding on to it in fear that if I let go of it, maybe I'll go back to the person who I was and I will make the same mistake or I will get hurt again. So it's hard to let go of that, but you're absolutely right that I should. Journaling, by the way, you're right, does help. But even when I journal, भाई, जब अगर आप पढ़ सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है, मेरे जो भी जर्नल किए हुए दिन है ना, I am always talking about गम. मैं कभी achievements को नहीं मानता, और मुझे यार बहुत ट्रांजिशनरी लगता है हर अचीवमेंट की. इसकी बात क्या करने, या लोग तो ये याद नहीं रखेंगे, बट यार गम की जो जिक्र है वो कभी हमें छोड़ते नहीं, और जो खुशियाँ है उसकी जिक्र ही नहीं आते भाई. हाँ bro, ये बात तो वैसे यार I've thought about this too, you know. There was a point where not even that long ago, about a little over a year ago, जब, you know, मैं काफी गम का मारा था, you know. And if you read any of my like
journal entries. Which They were I all have, like yeah. they all reflected that, you know, हाँ like that somber, like kind of low mood. हाँ And you know, I like if you read, there was just pages of me, like, you know, like मैं और मेरी तन्हाई and मेरी शिकायतें, you know, जी with life. जी But you know, at that point, I would realize, man, I'm doing it wrong. That the whole purpose of journaling is it's supposed to be about gratitude. You know, that's why they often call it, you know, a gratitude journal. yeah And if the negatives, you know, आपकी जो गिला और शिकायतें हैं दुनिया से, if those outweigh the things you're grateful for in your, you know, in your journal, then that's you're doing it wrong, you know what I mean? और फिर उसके बाद से I started focusing more on like the positive, you know, when I like क्या कहते हैं bro, when I started to think about like you know, what is the real purpose of journaling, right? Like why do we do this in the first place? And it's more to like, obviously it's to process what's happening, but it's also to see to take away the good from what's happening, you know, and try to let go of the bad. yeah And yeah, you want it to be focused more on gratitude and the things that you're thankful for, I think. I do agree, and I've been trying to be more grateful for everything I have, and यार ये आसान होता है कि it's very like I understand what I'm blessed with. Apologies, we've just lost Karsh. Yo. Hey bro. Yeah. पता नहीं, I don't know what happened. नहीं यार होता है, but like I was saying, so it's very easy for me to be grateful for what I've been blessed with. और मुझे पता है और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हर नमाज के बाद हर दुआ में शुक्र अदा तो मैं करता हूँ भाई कि ये सब मेरी कामयाबी नहीं है कि जो भी मुझे यार ये वैसे अली ज़फ़र ने भी कहा था कि जो अच्छे बात है जो मैंने की ये खुदा से है और जो बुरे है ये मुझसे है और मैं ऐसे ही मानता हूँ कि जो भी अच्छे बातें मैंने की है मैं कभी नहीं मानता कि ये मेरी कामयाबी है कि खुदा की शुक्र है मगर जो बुरे बात है ये मैं अपने आप की ख़ता मानता है और शायद इसलिए इस पर इतने गौर करते हैं कि यू नो आई कम्प्लीटली टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट मैं ना ये इत्तेफाक से होते या खुदा की या किसी लानत के सिर्फ मेरी ख़ता है तो मे बी दैट्स वाई but you make a very good point but I think you also get the fact that the well I'm in is kind of deep and it's kind of hard to change 30 years worth of a thought process but मुझे ये यार I think you understand this कि मुझे पता है कि even if the thing that's bothering me मैं जिस वजह से जिस वजूहात से गमज़दा हूँ वो भी अगर मुकम्मल हो गए तो मैं किसी और वजह से हो जाएंगे तो ये तो मसला है यार ये इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ to not get occupied with the destination to not have destination preoccupation. Yeah. As hard as it is it's much easier said than done. Yeah. But क्योंकि मुझे भी पता है कि if you tie your happiness to things and goals, it's never really going to be what you think it is in your head, मेरे सिर्फ एक सवाल है what happiness what am I telling yeah man that's a good point man but yeah dude I think these things can then definitely take away from like enjoying the journey when you get to fixated on like the end goal, the result. Sometimes you're better off just like not overthinking things, taking one day at a time and just doing what feels right, you know what I mean? I agree with you. So if we kind of erase everything that we've learned through the course of a lifetime, right? जिंदगी की ज़्यादातर कोई मकसद नहीं होता है, right? Let's assume that's the case कि
मौत की फरिश्ते आने के वक्त आपको कुछ याद नहीं आता, that's not highlight reel, you know, कुछ नहीं होता. It just feels like यार वैसे ये काफ़ी दिन से मैं लिखा भी था शायरी में कि ज़िंदगी सिर्फ मौत की इंतज़ार है. बट अगर हम माने कि बेमकसद है ये ज़िंदगी, सही, एट द एंड इट्स ऑल पॉइंटलेस, यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग, नथिंग रियली मेक्स टू मच ऑफ अ डिफरेंस. आप अगर ज़्यादा कुछ की ही नहीं, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया वही रहता है, बाकी सब की ज़िंदगी ऐसे ही रहता है. तो आपके होने या ना होने से सिर्फ कुछ लोगों की फ़र्क पड़ता है और उसकी अलावा कुछ नहीं होता, सही. तो अगर बेमकसद है, let's say it's like a video game, right? कि ख़त्म करने से आपको कुछ नहीं मिलना है. You have to go out and buy another video game, right? मगर आप अगर ये ख़त्म करने की ख्वाहिश छोड़ दें, सही, और मानते कि ये इसके अलावा मुझे दूसरे गेम लेने के पैसे नहीं है मेरे पास, ये आखिर गेम है मेरे, सही. और अगर आप जितना वक्त ज़ाया कर सकते हैं, जितना कुछ कर सकता है उस गेम में, सब करता है. और आपको पता है ये एक तो ज़रूरत है करने, दूसरे ये चाहत भी है वक्त ज़ाया करने की परफेक्ट तरीका है. तो शायद वो आपको कुछ ना कुछ खुशियाँ तो मिलवा देता है. तो मुझे लगता है कि शायद ज़िंदगी भी ऐसा है कि you know it's just like a pointless game and nothing like Queen once said, you know, nothing really matters. So maybe that's the point all of it. मगर मुझे भी पता नहीं. Yo, bro, give me 1 second. I'll be right there. All right. I'm just picking up my order. All right. No issues, buddy. My bad. No, it's fine. Oh. तो शायद वो है. मुझे भी अक्सर पता नहीं, but this is sounding really hopeless and like मैं गम के मारे हूँ और ये सब हूँ. But Hi. Yeah. Good. How's it going? Vous êtes Mauricien? Oui, Mauricien. Ah, c'est super. J'ai passé un peu de temps à l'île Maurice il y a quelques années. Oui. Non, je suis indien en fait, mais je suis né ici au Canada. Mais j'ai passé un peu de temps à Cupip et Magoul aussi. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai lu que vous parlez créole et ouais, 8-0, 4-5. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir également. Rencontrer des Christians ici, c'est assez rare. Ah non. Il y avait beaucoup de ok. Donc je sais pas si on bouge ou pas. Ah ouais. J'étais tout là, juste après le cours. Ils avaient 0 tour. Et ici même, il y avait un moteur, il a bougé, il fait. Il y a d'autres moteurs. Ah ouais, j'avais aucune idée, parce que c'est la première fois que j'ai rencontré quelqu'un. C'est là pour combien de temps? Il y a un mois. Ok. Mais oui. Mais des fois, si tu vas à Portugal, si tu vas entendre des moteurs parler. D'accord, non, c'est super parce que j'adore la cuisine mauricienne surtout, c'est incroyable. Même le trinidadien, c'est similaire, par exemple. Le mauricien, ça fait mélange. Chinoise, malgache, bien sûr, surtout le poisson, c'est hyper bon. J'aime mieux vin d'ail poisson. Ouais, j'ai lu, c'est super. Dal puri, c'est délicieux. Mais si tu veux le dal puri également, et ça, c'est voilà. C'est ça que tu as commandé. Ah ouais, c'est vraiment similaire. C'est le même que bon. C'est intéressant en fait. C'est le même culture que moi, un petit peu, pas exactement, mais là, c'est intéressant. Mais l'île Maurice, c'est incroyablement beau. Quelques endroits sont hyper beaux. Oui, au niveau du paysage, c'est une autre chose. Ça fait plaisir
cas, ouais, ça fait plaisir, enchanté. À la prochaine fois. Ouais, bien sûr. À la prochaine. Yo, are you still there? Yeah, of course. Hey, bro. Yeah, buddy. Yeah, still here. Man, my bad. No, it's sorry, alright. I got. It's pretty interesting conversation though. I can't believe how polite you are, buddy. Like, हम क्यों दोस्त हैं भाई? मैं तो इतने बात मेरे रिश्तेदार से नहीं करते. Bro, no, as a peli the forward, you know, I met someone from Mauritius here. No way, yeah. So I saw that. Yeah, I saw that on his profile when he came. Because on Uber Eats you can see like they post like what languages they speak and like and stuff like that. So I just had to ask you, and then, but yeah, man, that's just pretty interesting. I told him that I don't really. It's the first time I met someone who's Mauritian here. Yeah. He was telling me if you want to meet people, there's up the road, like there's a big community there. No way, that's so good. Yeah, but I love Mauritius, so I love the time I spent there as well. Reunion, Mauritius, both. Mauritius a little more impactful just because, I felt like I just blended right in, and most people there are of Indian origin, right? So, it was a different experience, and people were more curious as well, about, many of them have many questions about, India and stuff, That's काफी अजीब. But, dude, it's been so long that I've ordered something कि मुझे याद ही नहीं आ रहा है भाई वो ज़माना. नहीं यार अच्छी बात है वैसे क्योंकि it's like especially since you're into fitness and like you said you cut out all sugar to get the छोटी सी कहानी कहता हूँ आपसे कि कल मैं दावत पर थे. जैसे मैंने कहा रिश्तेदार के घर पे थे तो दावत पर उसने बुलाए और काफ़ी लोग थे और भाई कि उन्होंने 2 तरीके की बिरयानी बनाई और काफ़ी और भी चीज़ें बनाए थे. और सब ने खाया सिर्फ मैं नहीं खाया. सही. और नहीं खाया मतलब मैं वहाँ टेबल पर बैठा था मेरे प्लेट नहीं मैंने इतने उसने कहा कि काफ़ी अच्छी बंदी था 1000 बार मुझे कहा यार कुछ ना कुछ मैं आपके लिए बनाता हूँ और मैंने कहा नहीं यार मैं खाता नहीं. तो काफ़ी अजीब बंदा हूँ यार मैं कि एक तो बिरयानी नहीं खाते दूसरे दावत पर नहीं खाते और यार ये सब पता नहीं कि क्यों करने मेरे लिए इतने आसान है और मेरी ज़िंदगी की तरीका है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि the sacrifices I've made to get what I have. like लोग ये कहेंगे कि यार आसान है तेरे लिए जो भी आपने कमाया या की. सही. बट नहीं होता भाई कि मैंने काफ़ी सैक्रिफाइस कर यहाँ तक आए और अगर दावत पर भूखी मैं रहा ना तो ये सब कुछ ना कुछ मकसद के लिए होता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोने भी ज़रूर होता है और पता नहीं यार काफ़ी अजीब है. नहीं पर मैं समझ सकता हूँ यार क्योंकि एक बात तो है कि I think उम्र के साथ आपके टेस्ट बड भी बदलने लगते हैं you stop craving the kinds of foods you liked when you were younger. Or pata hai, I know the last time we talked about biryani, I was so shocked to learn that you're not a biryani guy. But बाकी यार मैंने पिछली 2 बार जो बिरयानी खाई थी, maybe it was the fact that it was like not a good, it was not prepared well, like it was not very good, and it was too spicy, but मुझे यार बिल्कुल पसंद नहीं आई थी यार. मुझे लगा इसमें यार मिर्च ज़्यादा है तेल ज़्यादा है बिरयानी का it made me feel like यार I don't have the taste buds for biryani anymore मुझे यार हमेशा से यार मेरी बचपना में भी मुझे पसंद नहीं था
और यार हमारे Not जो कहते हैं कि कल्चर है ना यार, हर जगह जाओ तो बिरयानी अहम है भाई। कि पता नहीं बिल्कुल क्यों हम इतने उनको माना है कि इसकी भी बेहतर काफ़ी डिशेस है मेरी ओपिनियन में। सही बात। मगर जैसे निहारी तो मैं खाते हैं भाई, और कुछ और होते चने भी मेरे लिए ठीक है, कभी कभी छोले भटूरे भी खाते हैं, मगर बिरयानी नहीं भाई। पता नहीं कि क्या है, मगर मुझे जब ज़्यादा हो जाता है ना तो कुछ नहीं लगता है कि इट्स टू मच गोइंग ऑन, कि ये क्या चल रहा है भाई। कि रशियन सर्कस आ गए कि एक तरफ से हाथी जा रहे हैं, दूसरी तरफ तो शेर आ रहे हैं, मतलब मुझे ही पता नहीं कि कौन से क्या चुतिया पर चल रहा है भाई। एक बात करो, एक बात सही से कर लो, काफ़ी है। ये सब एक ही वक्त में करने की क्या जरूरी। भाई बल्कि रशियन सर्कस भी नहीं यार, ये तो रशिया की तरह ही है ये नाइस नाइस। क्या क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, दो सब GTA चल रहा है। हाँ जी ओ गुड टू you went from the circus to geopolitics, nice. नहीं GTA मतलब ब्रो के जो गेम था ब्रो। हाँ सही nice. पर नहीं यार, it's just lawless, इसलिए पर नहीं, बिरयानी की बात ये है ना, एक खासियत बिरयानी की ये मैं मानूंगा कि I like how there are so many regional variations, कि हर जगह की अलग तरह से बिरयानी बनती है, like no two places have the same बिरयानी। और अगर आप यार केरला की बिरयानी मुझे वाकई में बहुत पसंद है यार, like मैंने प्रॉन्स की बिरयानी और फिश की बिरयानी सिर्फ केरला में खाई है, but I felt like यार I would never have those two dishes ever, पर मैंने जो खाई यार I was a fan man, like बहुत कमाल की थी। यार मेरी वालदा की ख्वाहिश है आप जैसे बेटा मिलना, जब वक्त मिलता है तो घर आ जाओ भाई, खुश होंगे वो। यार पता नहीं कैसे, पर हम इस बार भी नहीं मैं घर आया क्योंकि वैसे वालदा ने इस बार मौका अच्छा था। हाँ काफी बार बुलाया, मगर मैंने भी भूल गई भाई कि वो हमेशा पूछते हैं आपके बारे में, मगर मैंने उनसे कहा कि यार जब छोटे थे तो मिले नहीं, तो अब अगर मिलेंगे तो यार ये क्या बात है कि कंटिन्यूटी तो होना चाहिए ना। हाँ ब्रो, कितने 20 साल बाद कि यार हाँ it's I've heard of you, it's not like कभी when like you remember 8 Simple Rules, जब वो of course, yeah, for dating my teenage daughter, the what's her name, man, Kuko? Yeah, God damn it, how do you remember all this shit, man? Dude, because she was in Big Bang Theory, Katie Kuko or something like that. Yeah, Katie Kuko, yeah. It was her, yeah. And do you know what I want? I want to ironically wear that t-shirt, that has the 8 rules printed on it. कि मुझे ज़रूर पता है कि nobody will get the reference. Yeah, okay, it's so like... it's so unique, you know what I mean? Yeah. Like, can you believe that was the premise for a show? Yeah, no, go ahead. No, that was it. I just wanted to say that. Go ahead. No, I was just gonna say, man, like, only people who had Star World back then would remember that show. Like, outside of that, no one knows that actress for anything other than Big the Bang Big Bang Theory. Yeah, true. And the Big Bang Theory, I'm not too much of a fan of. No, man, it sucks so bad, dude. It sucks donkey balls. It does. Like, I didn't want to say it because, मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को offend नहीं करे, but like it's honestly a shit show. And if you've met anybody who's smart in real life, that's not how they are. Like, I don't know what this stereotyping of smart people is happening there. Like, nerds वैसे नहीं होते, but it's such like वैसे अगर nerds वैसे होते मगर ऐसी बंदियाँ ज़रूर नहीं होते उनकी ज़िंदगी में, ये words कभी collide नहीं करते। People need to understand this कि खूबसूरत लड़कियां कभी नर्ड्स से कोई ताल्लुक नहीं रखते भाई। जी बात सही है आपकी। I mean like it's just एक अलग ही सीन होता है Yeah, this is like fan fiction written by a nerd, like
It's like he's just writing his own life, but it's a horrible show. Oh. Magar, just because we have about 5 minutes left, I would like to kind of close out this episode. तो जिंदगी की मकसद के बारे में बात कर रहा था, और I feel like I've learned something in talking about this, but at the same time I feel like हम सब एक ही वजूहत ढूंढ रहे हैं, और जो भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब वजह है तो वजह है भाई, और कोई ज़रूरत नहीं कि हमेशा ये सोच भी जहन में नहीं आता है कि ज़िंदगी की मकसद क्या है। सिर्फ बुरे वक्त में आता है कि अच्छे वक्त में कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़िंदगी की क्या मकसद है या नहीं, आज की दिन अच्छे गुजरे ये काफ़ी है। मगर आपकी फाइनल थॉट्स क्या है जी? बस यार इत्तेफाक करते हैं हम कि अहम यह है कि आपका कुछ भी करके अगर आपका वक्त गुजरता है और बस आप you have the all the necessities, पहली बात तो ये है कि ये भी पर इस पे हम सोचते नहीं हैं how blessed we already are, Sure. Like most people don't have that, कि अगर आपकी अच्छी सी जिंदगी गुजर रही है तो that alone is like a lot to be thankful for, जी. और उसके आगे तो बस आपकी मर्जी है, where you take your life, क्योंकि like everyone gets dealt a different hand, but it's more about how you play your hand, Nice. और यार एक शेर है कि जो आपने पहले कहा था उसकी जैसे कि वक्त गुजरने में भी वक्त लगता है। Oh bro, come on, man, that's fucking dope. जी Man, ये एक अरबी में भी कहावत है, आपने शायद सुनी होगी कि it's be an knucklehead but don't be a knucklehead. God damn it. जी सही क्या मतलब it makes sense in Urdu too कि आपको अकल का इस्तेमाल करना चाहिए चाहे बजाय नकल करने के, जी मानता हूँ यार। और जैसे मैंने कहा था कि मेरे जो इंस्टाग्राम में जो पोइट्री की पेज है वहाँ काफ़ी तो वहाँ मेरी काफ़ी दोस्त है, और जो भी दोस्त है कि वो काफ़ी अच्छे लिखते हैं, and they're like they're not big what do you call writers or anything, they're just friends of mine, but कभी उनके अल्फाजों में मुझे अपने आप की एहसासत नज़र आता है। तो मेरे एक दोस्त है, उनकी नाम आयशा है ऐसे, और मेरे वैसे दोस्त नहीं मानता है, और मेरी ज़िंदगी में ये हर किसी से मैं कह रहा हूँ कि कभी एक आयशा नहीं होंगे तो सिर्फ दोस्त है। तो उसने कहा था, शेर था उसकी कि और कभी कभी ज़िंदगी इतने बिखर जाती है कि हम ना माजी के होते ना मुस्तaqbil के। और जी तो यार सिर्फ 1 मिनट बाकी है, तो आपको क्या लगता है कि ये एपिसोड की नाम क्या लगेंगे? ना माजी के ना मुस्तaqbil के। यार खूबसूरत तो maybe that credit goes to you for that, man, but maybe I know आयशा को no, I think that's the perfect title, जी आयशा को देते हैं जरूर। I think you could go a little further. It could be ना माजी के ना मुस्तaqbil के और बिना मकसद के। Wow, I'm becoming Amir Liaquat now. Okay, wow. If I don't know, if you keep going, maybe you'll do one better, but like 30 seconds left. So this has been
season 3, episode 5 of the Karshan FS show. Now maazi ke, now mustaqbil ke, or bemaqsad? Bila maqsad ke. Or bina maqsad ke. We'll see you next week.